अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3। सो पार्ट 1 हमारे पास, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। सो व्हाट विल वी डू? सिंपली हमारे पास गिवन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। हमने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k सेपरेट कर लेंगे, k इज इक्वल टू y बाई एक्स। y गिवन है हमारे पास 7, x हमारे पास गिवन है 3। सो k इज इक्वल टू 7 बाई 3। देन हमने क्या करना है, फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। सो व्हाट विल वी डू? वी यूज दिस रिलेशन y इज इक्वल टू kx। k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, k हमारे पास क्या है 7/3, y इज इक्वल टू 7/3x एंड दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 7/3x। पार्ट 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड x when y is equal to 35 and find y when x is equal to 18. So what will we do? Simply we use this relation y is equal to kx। k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, विच इज 7/3। सो y is equal to 7/3x। So in first part we have to find the value of x and the value of y is given 35. So we'll put 35 here. 35 is equal to 7/3x. So x is equal to 35 into 3/7. So x is equal to 15. In part B, we have to find the value of y when x is 18. So y is equal to kx and y is equal to 7/3x. So we have to find the value of y and the value of x is given, which is 18. So y is equal to 42. So क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।